उसके दिमाग में ये नहीं होता दैट आई एम टू हेट दिस एंड दैट पर्सन. दिस इज द ओनली सोसाइटी. ये सोसाइटी है जो हमें हेट्रेस करना सिखाती है. नो वन इज इनबॉर्न विद हेट्रेड. कोई नफरत के साथ जन्म नहीं लेता है. इनबॉर्न मीन्स जन्म लेना. The author's ideas is that if the people can be taught hatred, they can also be taught love and brotherhood. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये चीज क्यों कहते हैं कि कोई भी जन्म से नफरत सीख के नहीं आता, ये सोसाइटी है उसको सिखाने वाली. तो अगर एक सोसाइटी एक इंसान को नफरत करना सिखा सकती है तो वो लव करना, ब्रदरहुड, भाईचारा भी सिखा सकती है. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेल्सन मंडेला of telling this thing that the human being is not a inborn hater, है ना. वो कोई inborn hater नहीं होता है. In fact, if the society can teach the hatred to the birthing child, so it can also taught to the child or to the human being love and brotherhood. In their most testing times in prison, when they were being treated ritually, Mandela would see a pinch of humanity and kindness as one of the guards. Now he's saying कि जब वो जेल में थे, he has struggling a lot. उन्होंने बहुत struggle किया है. And when he was in the imprisonment, जब वो जेल के अंदर imprisoned थे, he faced a brutal cruelty from the human beings. बहुत brutality he faced it. और उन्हीं वही नहीं, उनके साथ जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो दूसरे अलग लोग थे, the people who were also fighting for the freedom and struggling and imprisonment, he has witnessed that brutality. उन्होंने यहाँ पर नेल्सन मंडेला की बात हो रही है. उन्होंने कहा कि मैंने विटनेस किया है, मैंने देखा है, मैंने सहा भी है और मैंने देखा भी है. So he is saying in that atmosphere, in that ambience, he has experienced the kindness and the humanity also. उन्हीं ब्रिचुअलिटी के बीच में उसने क्या गार्ड से, किसी एक गार्ड से ह्यूमैनिटी भी एक्सपीरियंस किया है, काइंडनेस भी किया है. एंड दैट वाज द एनफ टू कीप हिम गोइंग. और वो बहुत था मेरे लिए. वो सारी ब्रिचुअलिटी, वो सारी हेट्रेडनेस जो थी वो एक तरफ, और उस गार्ड का लव और काइंडनेस जो और ह्यूमैनिटी था वो एक तरफ. ही गेव हिम द स्ट्रेंथ टू फाइट मोर एंड मोर. He believes that goodness in human beings can be suppressed but never eliminated. उन्होंने कहा कि ये मैं मानता हूँ कि इंसान की अच्छाइयाँ जो है वो दबाई जा सकती है लेकिन omit नहीं की जा सकती. This is very important line. Why he is saying this thing that human beings can be suppressed but never eliminated. He is saying this thing because he knew and he has a faith in God and as well as the human beings, that nobody is a born hater. कोई भी born hatred नहीं होता. In fact, the society can teach him, है ना, him or her. So if the society can teach the hatredness, it can teach the kindness and the love and the brotherhood also. And that is why he says this thing that human being can suppress. वो उसको दबाया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, but eliminate नहीं किया जा सकता. According to the author, every human being has its responsibility towards the family as well as the society. Now this is he is saying कि हर एक इंसान का एक responsibility होती है family के लिए भी और एक अपनी society के लिए भी. ठीक है. Generally under normal circumstances, a person can maintain the balance between the two, but in the countries like South Africa, it was never so easy. Now he is saying कि generally what happened, a person can maintain the balance between the family and the society, but अगर हम ये माने कि it is not very much easier for South Africa जैसे country जो खुद segregated है. So when a person of color would come up for his society, he would be arrested and taken away from his family. Now अगर कोई उनके जैसा डार्क स्किन इंसान सोसाइटी में आता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है and he was just segregated from his family, thus keeping them fulfilling both responsibilities. In the beginning, Mandela did not put his people over his family, but it was only later when he realized that in order to be there for his people, he was compromising his duties towards his own family. Now he is saying this also कि इस आज़ादी के लिए, इस जीत के लिए he has also having some responsibilities for his family, but he has not bother about the family.
लेकिन उन्होंने कभी भी फैमिली के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बॉदर नहीं किया, रादर ही ऑलवेज फाइट फॉर द कंट्री एंड द फ्रीडम. The author did not have the plan to stand against the apartheid system early in life. हालांकि he has never planned to be a leader. The author did not have the plan to stand against the apartheid system early in life. He lived his childhood like any normal child in South Africa. वो अपनी बचपन उन्होंने अपना बचपन जो है वो बहुत एक नॉर्मल इंसान के जैसे ही, दूसरे लोगों के जैसे ही निकाला था. He never think about it. He only had to follow the rules set up by his father or the customs of the tribe. बस उनको यही करना था कि जो भी उनके फादर कहते थे, जो भी उनके फैमिली में या उनके ट्राइब में या उनके लोगों का जो नियम था, लॉ था, whatever he has to follow without ifs and buts. As soon as he grew up, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे से बड़े adolescent में आते गए and begin to learn the facts as how to people of the color are treated. Now, जैसे जैसे वो बड़े हुए adolescent में आते गए, he understood and he realizes the fact that that because he was a dark-skinned people or a human, he was not having the normal rights and how he was treated. He decided to stand against it, and then only he decided to stand against it because he experienced that. He had this urge for freedom and urge जो enthusiasm था उनकी freedom के लिए from inside, just for himself and later for having basic life, not just for himself but for everyone. शुरू में उन्होंने अपनी लड़ाई सिर्फ खुद के लिए लड़नी चाहिए थी, सिर्फ खुद के लिए, लेकिन later on जैसे जैसे दिन बीतते गए, he experienced more and more. Now he just want a basic and a common life for everyone, for every black people. In Johannesburg they had to struggle for having a peaceful marriage. इन जॉन्सबर्ग में एक पीसफुल मैरिज के लिए भी उनको लड़ना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था. फैमिली एंड द बेसिक एनिमिटीज विच एवरीवन हैज एक्सेस टू, वेयर लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर होता है एक बेसिक एनिमिटीज होती है, रोटी कपड़ा और मकान, इजंट इट. लेकिन इन लोगों को इसके लिए भी, इन बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था. Nelson Mandela joined the African National Congress, that is ANC, when he realized it is not only him whose basic rights were snatched away, but all those who looked like him. और जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, उन्हें पता लगा, he realized this thing, कि जो बेसिक एनिमिटीज की बात वो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही नहीं, उनके जैसे दिखने वाले हर इंसान के पास लैक है. Every people who look like Nelson Mandela, that means every people who are black or who are darkened skin are lacking about the basic enmities. उनके पास basic enmities नहीं है. He had this fire inside him to free his people from the injustice, and that day he had a fire on him, inside him. Fire yani the day he decided that now he wants the freedom, he wants the justice for the people who are like him. It was this fire that changed the author completely as a man, from being a scared to brave, a lawyer to the one breaking the law. Now ये जो decision था, ये जो आग थी उनमें, ये जो जज्बा था, ये जो determination था, this only changed this Nelson Mandela. It was the fire that changed the author completely as a man. This is also important. See, the question can come like this, that which fire is talking about, or he had a fire, who is he belongs to and why he is saying this. It was this fire that changed the author completely as a man. एक इंसान के तौर पर इस फायर ने, ये जो डिटर्मिनेशन था, ये जो डिसीजन था, है ना, ये इसने नेल्सन मंडेला को पूरी तरह से चेंज कर दिया. फ्रॉम बीइंग अ स्केयर्ड टू ब्रेव, जो ब्रेव होने के लिए डरते थे, उनको डर लगता था कि अगर वो ब्रेव हो जाएंगे तो, या वो अगर रिवोल्टी हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन. अ लॉयर टू द वन ब्रेकिंग द लॉ, एक ऐसा लॉयर जो खुद ही लॉ तोड़ दे. अ फैमिली मैन टू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली तो है लेकिन वो विदाउट होम है. एंड अ लाइवली मैन इनटू अ बीइंग अ मॉन्क, और एक इंसान जो मॉन्क बन जाए, मॉन्क यानी साधु संत बन जाए. It was the knowledge that he and his people have restricted freedom that made him into a selfless man as opposed to before. Actually what happened कि ये जो struggling थी, जो freedom के लिए struggling थी,
It was not started from the birth of Nelson Mandela as we have earlier only read it about. ये start हो गया था जब नेल्सन मंडेला के जन्म से भी बहुत पहले. सो एक्चुअली उनके जो एंसेस्टर्स थे या उनके जो ट्राइबल पीपल थे या उनके जो फादर थे, फैमिली जो थी, वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप कर देती है व्हेन यू आर रिवोल्टिंग लाइक दिस, बिकॉज दे न्यू दिस थिंग दैट रिवोल्ट मीन्स डेथ एंड नोबडी वांट्स टू सेक्रीफाइस दिस ना. सो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने उनको रेस्ट्रिक्ट किया था, बट दिस डिसीजन मेक हिम अ सेल्फलेस मैन. According to him, freedom cannot be divided. Freedom को divide नहीं किया जाता. Freedom means freedom. Snatching it away from some was equivalent to taking it away from everyone, and that meant taking it away from the author. उनके लिए स्नैच कर लेना, किसी के राइट्स को स्नैच कर लेने का मतलब है आप सिर्फ उसको नहीं, उसकी पूरी कम्युनिटी से आप स्नैचिंग कर रहे हो. वो जो राइट है वो आप सबसे स्नैच कर रहे हो, विच मीन्स दैट देयर विल बी नो इक्वालिटी इन द सोसाइटी. He mentioned that the need to fire the oppressor is as high as that oppressed, because the oppressor is bounded by the shackles of hatred. Now he mentioned that, उन्होंने mention किया कि ये जो freedom है, need to be free, ये जो freedom की जरूरत क्यों है, क्योंकि the oppressor is as high as the oppressed. जो डिसीजन है, जो सोच है, वो सोच रखने वालों से भी ऊंची है. द ऑपरेसर इज बाउंडेड बाय द शैकल्स ऑफ हेट्रेड. और ये जो ऑपरेसर्स हैं, ये जो लोग हैं, ये किससे बंधे हुए हैं? नफरत की वजह से. इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है. He has the weight of all the people who has dominated. उनके ऊपर उनको ऐसा लगने लगा कि उनके ऊपर एक बोझ है उनके जैसे लोगों का. For he carries the curses of their families. For taking away someone else's freedom and making them a prisoner, he became a prisoner of the baseness. Thus he is robbed of his humanity and need to be freed. और इसके लिए ही उन्होंने स्टार्ट किया लड़ाई और उनको इम्प्रिजन भी मिली. So this is the chapter, and I feel now you will understand the chapter. Now each and every line is why it is important to learn this thing and why I have explained line to line better. क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज नॉट द स्टोरी, कि कोई वो स्टोरी नहीं है जो आप याद रख सको. ये एक स्पीच है which you have to remember because many questions can come from the chapter. So I will provide you this thing also, this PDF also of this is the explanation of full chapter, line to line explanation is there. You just go through this also, and please listen my videos properly. Even then if you are having any sort of doubt, I'm gonna clear it out. Okay, thank you. Okay.